topic. We have discussed a lot about this topic, but we will take one example before we finish it. So, हम एक एग्जांपल लेते हैं जो हमने आप लोगों को दिया था, उससे थोड़ा सिमिलर है. हमने वो असाइनमेंट क्रिएट कर दिया है क्लास में, एंड यू कैन हैव अ लुक ऑन इट. सो द प्रॉब्लम इज आई हैव वन स्विच PB1. उससे पहले मोटर ऑन होता है, और मोटर ऑन होने के यानी आफ्टर 10 seconds the motor is on, a fan is on. Okay, मोटर ऑन हुआ, मोटर होने के 10 सेकंड के बाद फैन ऑन हुआ. देन आई हैव अनदर पुश बटन स्विच PB2, जो इन दोनों को बोथ should turn off after 5 seconds. That is our problem. ये हमने दिया था, आप में से बहुत लोगों ने किया भी होगा. आई हैव क्रिएटेड दिस in the assignment also, so that you can uh, put it in that. तो वो थोड़ा different था. This is a little different. So what I have to do is I have to first draw the PLC diagram. So let me draw it on a new one, so that these are my power lines, contactor, which is your output का एड्रेस है 0, then 0. Then I have, this is push button 1. This is I input 0 to 0. Okay. और फिर हमने पढ़ा था होल्डिंग फंक्शन क्या है, हाउ टू डू द होल्डिंग फंक्शन. So the holding function is I will have a same as that of input Q00. This is 0. जो आउटपुट का एड्रेस है वही हमने यहाँ पर कर दिया. So the address of this rung is 0000. So what will happen? जैसे ही आपने पुश बटन 1 दबाया, so your motor turns on. और पुश बटन का मतलब ये है कि आपने दबा के उसको छोड़ दिया. जैसे ही एनर्जाइज हुआ तो जो इसका स्टेट है वही इसका स्टेट हो जाएगा. यानी इफ दिस इज ऑन देन दिस विल ऑन. सो द पावर विल कंटिन्यू टू फ्लो टू दिस पाथ. व्हेन इफ यू रिलीज PB1 बटन, इसको कहते हैं होल्डिंग स्टेट. ये हमने आपको पहले डिस्कस किया हुआ है. अब इसके बाद व्हाट यू हैव टू डू एज पर द प्रॉब्लम, द फैन इज टू टर्न ऑन आफ्टर 10 सेकेंड. तो इसका मतलब आपको टाइमर ऑन डिले लगाना है. सो यू हैव टू मेक अनदर रंग. So now I have another contactor. This is I0
अगेन 0, दिस इज सेम PB1, यानी जब ये दबाएंगे तो ये भी दबेगा. देन यू हैव टू प्रोवाइड व्हाट, टाइमर. दिस टाइमर इज टाइमर ऑन डिले. टाइमर का एड्रेस क्या है? T40. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. टाइम बेस क्या है? सेकंड, क्योंकि प्रॉब्लम में आपका सेकंड दिया हुआ है. देन वी हैव प्रीसेट वैल्यू. प्रीसेट वैल्यू में क्या है? आफ्टर 10 सेकेंड. सो प्रीसेट वैल्यू 10 सेकेंड. देन एक्यूमुलेटर. अब आप इसको होल्ड कैसे करेंगे? विद इनेबल बिट. दिस इज योर इनेबल बिट. इसका एड्रेस सेम होगा जो टाइमर का एड्रेस होगा, T40, एंड दिस इज हाउ इट इज कनेक्टेड. ओके. सो व्हाट विल हैपन, जब आपने पुश बटन को होल्ड किया, तो पुश बटन को होल्ड करने के बाद ये तो मोटर ऑन हो गया, और यहाँ जो है इस रंग में, यानी द नेक्स्ट रंग, दिस इज 0001, ये इसका एड्रेस है. व्हाट विल हैपन, योर टाइमर विल मेक ए डिले ऑफ 10 सेकेंड. अब इस डिले के बाद आपने डिस्कस किया था 3 तरीके के बिट्स हैं: इनेबल बिट, टाइमर टाइमिंग बिट, एंड देन डन बिट. तो जब ये प्रीसेट वैल्यू एक्यूमुलेटर के बराबर हो जाएगी, सो व्हाट वी विल हैव डन बिट, जो कि सेट हो जाएगा, 1 हो जाएगा. सो हम डन बिट का यूज करेंगे. सो वी विल यूज a contactor whose address will be same as of timer. This is done bit, and this done bit is now connected with fan coil. इसका आउटपुट 0 to 1 होगा. ये 0 to 0 पे मोटर कनेक्टेड है एंड 0 to 1 पे फैन कनेक्टेड है. तो जैसे ही 10 सेकेंड का डिले प्रोवाइड होगा मोटर ऑन होने के बाद, व्हाट विल हैपन, योर फैन विल बी ऑन. जैसे ही डन बिट ऑन हो जाएगा तो ये जो नॉर्मल ओपन कॉन्टैक्ट है ये नॉर्मल क्लोज हो जाएगा, एंड दिस फैन विल बी ऑन. तो जो पहला हमारा स्टेज था कि पुश बटन 1 से इन दोनों मोटर और फैन दोनों को हमें ऑपरेट करना है. मोटर ऑन हो गया और मोटर के ऑन होने के 10 सेकेंड के बाद फैन ऑन होगा. दिस इज हाउ द प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ फैन. यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके. Yes, sir. ओके. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट. इसका हमने एड्रेस दे दिया 0002. नाउ व्हाट विल हैपन, अब ये कह रहा है कि आप जो है वो, जब ये फैन ऑन हो गया उसके 5 सेकंड के बाद दोनों टर्न ऑफ हो जाए. आइए आइए आइए, एक मिनट. किसने भैया? तनवीर साहब ने. to turn off both the uh, fan and motor after 5 seconds of the operation of these two. So I'll continue from here in the next slide. वो रंग आपका आगे बढ़ता चला जाएगा. So this is,
new power lines. So what I have to do is अब हमें दूसरा टाइमर लेना पड़ेगा. मीन्स now I need to take a timer. अब हमें कॉन्टैक्टर लेना पड़ेगा PB2. दिस इज पुश बटन 2. ओके. Now input I01. Then this push button 2 will again be connected with a timer on delay. Timer on delay. अच्छा. Then we have to uphold it. So इसको होल्ड करने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा? इनेबल बिट का. नाउ व्हाट विल हैपन, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? टाइमर एड्रेस लिखते हैं. टाइमर एड्रेस इज T41. हमने पहला जो टाइमर लिया था यहाँ पर देखिए आप T40 लिया था. नाउ सिंस वी आर इन द सेम प्रोग्राम, तो हम एक टाइमर को दो जगह यूज नहीं कर सकते, तो हमें दूसरा टाइमर लेना पड़ेगा, उस दूसरा एड्रेस T41. देन आई हैव टाइम बेस. टाइम बेस क्या है? सेकंड में दिया हुआ है प्रॉब्लम में. देन प्रीसेट वैल्यू क्या है? 5 सेकंड. एंड देन आई हैव एक्यूमुलेटर. और ये इनेबल बिट का भी हम एड्रेस देंगे T41. दिस इज जो दूसरा डिले हमें प्रोवाइड करना है 5 सेकंड के लिए, उसके लिए हमें दूसरा टाइमर लेना पड़ेगा. एंड द अदर टाइमर इज हैविंग डिफरेंट एड्रेस. रेस्ट द फंक्शन विल रिमेन सेम. नाउ व्हाट दिस विल डू, अब हमें 5 सेकंड के बाद हम किस बिट का इस्तेमाल करेंगे? 5 सेकंड के बाद हम किस बिट का इस्तेमाल करेंगे? डन बिट का इस्तेमाल एक बार फिर करेंगे. ये DN बिट है. सो यहाँ पर हमारा एक कॉन्टैक्टर आएगा. दिस इज कॉल्ड DN डन बिट और इसका एड्रेस होगा T401, यानी दूसरे टाइमर का. उसी तरीके से यहाँ पर DN होगा और इसका होगा T4 एड्रेस 1. ये दोनों नॉर्मली क्लोज रहेंगे. These two will remain normally closed. अब जैसे ही आपने PB पुश बटन 2 दबाया, सो व्हाट विल हैपन, पुश बटन 2 जैसे ही आपने दबाया तो ये इनेबल बिट से टाइमर एनर्जाइज हो गया और ये 5 सेकंड तक काउंट करेगा एक्यूमुलेटर. फिर ये डन बिट को 1 कर देगा. ओके. जैसे ही डन बिट को 1 किया तो अब ये नॉर्मली क्लोज है, ये नॉर्मली ओपन हो जाएगा. राइट. अगर क्लोज है तो ओपन हो जाएगा, ओपन है तो क्लोज हो जाएगा. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था. तो सिंस इट इज नॉर्मली क्लोज, तो जैसे ही वो टाइमर 2 विच इज एड्रेस इज T4:1 सेट करेगा तो ये इन दोनों को, यानी इसको और इसको, ये ओपन कर देगा और मोटर और फैन दोनों आपके ऑफ हो जाएंगे. देन इन एनी PLC प्रोग्राम एट द एंड you have to write with int, and then you have to provide address here 003 and then 0004. ठीक है जी. दिस इज हाउ a timer ladder diagram is made. अब इसमें ऑन डिले ऑफ डिले जैसे मैंने बताया था, टाइमर ऑन डिले कैन बी यूज एज टाइमर ऑफ डिले. जो हमने नॉर्मल ओपन रखा है उसको आप नॉर्मल क्लोज करके रखिए और फिर उसको नॉर्मल ओपन कर दीजिए. ऑल लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देयर. अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर है सो दैट शुड नॉट बी एन इशू. यू विल बी एबल टू सॉल्व. यहाँ तक क्लियर है? एनी डाउट टू एनीवन?
किसी को कोई डाउट? So we have only 22 students. क्यों भाई आप लोगों की क्लास में इतना कम अटेंडेंस आप लोगों की क्यों है? ये क्लियर है सबको जो बताया गया? Yes, sir. Okay. If that is clear, then now next topic we will start is interlocking in PLC. आप लोग को स्विच गियर में इंटरलॉकिंग पढ़ाई गई है? हाँ जी। Have you studied interlocking in switch gear? और किसी को पता है what is interlocking in electrical engineering? Anyone? नो। चलिए कोई बात नहीं। इंटरलॉकिंग कहते हैं जैसे दो सिस्टम आपका रन कर रहा है और आपको एक सिस्टम जब ऑन करे तो दूसरा ऑन नहीं होना चाहिए। ओके, दैट इज कॉल्ड इंटरलॉकिंग। मतलब म्यूचुअल इंटरेक्शन से दूसरा ऑन नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर जब ट्रेन मूव करती हैं तो कई सारी पटरियां होती हैं ट्रेन की। अगर आपने ध्यान दिया हो तो कई दफ़ा वर्ड आता है कि ट्रेन की पटरियों में इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है। इंटरलॉकिंग का मतलब ये है कि अगर आपने ट्रेन को एक पटरी पर रास्ता दिया तो फिर और पटरियां ऑपरेट नहीं करेंगी। उसी तरीके से जैसे दो मोटर आपने पैदल में लगाया हुआ है, एक ने अगर ऑपरेट किया तो फिर दूसरा आप उसका बटन पुश करते रहिए, दूसरा ऑपरेट नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड, ये दोनों इंटरलॉकिंग सिस्टम है। यानी वन हैज़ टू ऑपरेट एट ए टाइम, बट एक्सीडेंटली अगर दूसरे का बटन आपने ऑन कर दिया, क्योंकि ये दोनों आपस में म्यूचुअली कनेक्टेड है, तो दूसरा आउट ऑन नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड इंटरलॉकिंग। ओके, सो इंटरलॉकिंग सिस्टम कई जगह यूज होता है। So basically the meaning of interlocking system is that is to stop mutual interaction. To stop mutual interaction. अब कहाँ ये यूज होता है? ये यूज होता है मोटर स्टार्टिंग में। मोटर स्टार्टिंग का मतलब स्टार स्टार कनेक्टेड है, स्टार डेल्टा कनेक्टेड है, so one should operate. Then grid supply. ग्रिड सप्लाई का मतलब क्या है? अगर आप डीजी सेट है और हेलो, कोई कुछ कह रहा है? अगर ग्रिड सप्लाई है, डीजी सेट है, सो व्हेन यू ट्राई टू ऑपरेट, सो एक एट ए टाइम एक जगह से पावर आनी चाहिए, दूसरी जगह से पावर नहीं आनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड इंटरलॉकिंग, राइट। अगर आपने कई सोर्सेज से आप ग्रिड में पावर दे रहे हैं तो या जो लोड है उस पर जो है एक ही जगह से पावर आनी चाहिए। या ग्रिड में अगर आप कई जगह से पावर दे रहे हैं और ग्रिड रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल हो गई तो फिर एक ही जगह से आपका पावर जानी चाहिए। दैट इज हाउ द रिस्ट्रिक्शंस आर मेड, दैट देयर इंटरलॉकिंग सिस्टम्स आर यूज। इसमें बहुत सारे एडवांस चीजें हैं।
कन्वेयर सिस्टम है। कन्वेयर सिस्टम में क्या है कि लिफ्ट होती है, तो व्हाट व्हाट इट डज, एक मोटर अप के लिए होती है, एक डाउन के लिए होती है। सो जब आप अप ऑपरेशन कर रहे हो तो डाउन वाला ऑपरेट नहीं करना चाहिए, ईटीसी, राइट। तो दैट इज हाउ, यू नो। अब इसका जब आप इलेक्ट्रिकल डायग्राम बनाएंगे तो दैट इलेक्ट्रिकल डायग्राम इज वेरी कॉम्प्लेक्स। उसमें एमसीबी लगा होता है, फिर ओवरलोड रिले होता है, फिर यू नो होती है जो नॉर्मली क्लोज होती है, फिर आप उसमें कॉन्टैक्टर लगाते हैं, फिर कॉन्टैक्टर से उनके कॉइल्स को म्यूचुअली कनेक्ट करते हैं, देन हाउ लॉट ऑफ थिंग्स took place. But how it is done in PLC, that's what we are going to study. So PLC का मतलब क्या है? So let us understand this. So this is not timer, this is interlocking. Interlocking in PLC. So I have power lines, then what I have is one input, that is, let's say I0, 0. Then I left this in between, and then I have a coil which is output 1, 0 into 0. And then I'll have to hold this input by adding another contactor whose address is Q0 into जो आउटपुट का स्टेट है वही इसका स्टेट है। ओके, मैंने बीच में थोड़ा गैप दिया है, आई ऐड समथिंग देयर। इसका एड्रेस दिस इज 0 0 0 0। Then I have another input. This is output 0 1. Then I have Q0 1, क्योंकि यहाँ पर हमारा दूसरा कॉइल है, इसका आउटपुट है Q0 1। अब इंटरलॉकिंग का मतलब आप समझिए। इंटरलॉकिंग का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर एक एलईडी आपने कनेक्ट किया हुआ है, ए लाइट इज ग्लोइंग फ्रॉम हियर, तो इसको आपने ऑन किया हुआ है, आउटपुट 0 से आपने एलईडी को ऑन किया हुआ है, एक एलईडी आपने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। तो जब आउटपुट 1 ऑपरेट हो रहा है, इवन बाय मिस्टेक व्हेन इनपुट 2 जो इसका वाला है, अगर आपने इनपुट प्रेस भी कर दिया तो ये बाय मिस्टेक ऑल्सो ये ऑन नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से जब ये ऑन हो रहा है, ये ऑन हुआ है, तो ऊपर वाला आउटपुट ऑन नहीं होगा। एंड दैट इज टू बी मेक श्योर दैट दीज टू आर डन विद इंटरकनेक्शन ऑफ, ये दोनों इंटरनली कनेक्टेड है, दे आर ऑन वन सेम पावर लाइन्स, राइट। सो देन हाउ टू डू दैट? तो ये इंटरलॉकिंग कैसे प्रोवाइड करते हैं? तो यहाँ पर हम एक कॉन्टैक्टर देते हैं हियर, विच इज नॉर्मली क्लोज Q01, जिसका एड्रेस इसके बराबर होता है, और हियर आई हैव एड्रेस Q00, इसका एड्रेस ये भी नॉर्मली क्लोज होता है, इसके ऊपर होता है। अब आप फर्ज करिए कि आपने ये पुश बटन I0 को प्रेस किया, इसे आपने प्रेस किया, सो व्हाट विल हैपन?
जैसे आपने प्रेस किया व्हाट विल हैपन, ये कॉइल एनर्जाइज हो गई और फिर इसको होल्ड कर लिया, तो नाउ द पावर विल फ्लो फ्रॉम दिस साइड। अच्छा, आपने इसका एड्रेस जो है वो यहाँ का दिया हुआ है, तो ये जब यहाँ पावर फ्लो नहीं कर रही तो इसका स्टेटस नॉर्मली क्लोज होगा यहाँ पर। ये इसके बिल्कुल अपोजिट है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो जिसका एड्रेस देंगे जो नॉर्मल कंडीशन में होगा वो उसी स्टेट में रहेगा। जैसे ही Q01 सेट होगा तो ये नॉर्मली ओपन हो जाएगा। Q01 ये जो क्लोज कॉन्टेक्टर है यहाँ पर, दिस विल गेट ओपन नॉर्मली, राइट। उसी तरीके से यहाँ पर है, जब Q01 ये यहाँ पर ऑपरेट कर रहा है, when the current is flowing from this path Q00, तो ये जो है, ये जो कॉन्टेक्टर है, दिस विल गेट ओपन, तो यहाँ पर कोई पावर फ्लो नहीं करेगी। इन अनदर अनदर केस, जब इसको आपने, जब ये ऑफ है तो जब ये ऑन है तो ये नॉर्मली ओपन है, जब ये ऑफ होगा तो ये नॉर्मली क्लोज रहेगा, फिर इधर से पावर फ्लो करेगी, राइट। सो मीन्स एक एक कॉइल का, एक आउटपुट का ऑपरेशन is linked with other one and making sure that when power flows from this rung, it is not allowing the power flow to other rung. Okay, so this is called interlocking. Okay? तो इसका एड्रेस हम देते हैं 0001 and then I have, you know, the program is to be ended by writing end button. Okay, so this is how interlocking is written in PLC. यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? Yes, sir. तो यहाँ पर हमने एग्जांपल दिया है कॉइल्स का। तो इट कुड बी इंस्टेड ऑफ कॉइल, ये इनपुट जो है आपका द कॉइल वन, यू नो, इट कुड बी डिफरेंट डीजीज, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन। एक कॉइल वन की जगह आपने सोलर प्लांट का कमांड दे दिया, दूसरी जगह आपने फ्यूल सेल दे दिया, तीसरी जगह आपने आई मीन यू हैव सम अदर सोर्स ऑफ एनर्जी, और you have to interlock these three in such a way कि जब एक फ्लो हो तो दूसरा फ्लो ना हो। अब यहाँ तो हमने दो सिस्टम का लिया है, सपोज अगर तीन सिस्टम का हो तो फिर क्या करेंगे? अगर आपके पास तीन इनपुट हैं और तीनों इंटरलॉक करने हैं कि जब सिर्फ एक ही एट अ टाइम ऑपरेट करे और बाकी दोनों ऑपरेट न करें, सो व्हाट चेंजेस इट विल हैव इन माय लैडर डायग्राम? एनीवन फ्रॉम योर साइड? सर इसमें सर दो वो लगा देंगे सर, इसमें Q01 के तो Q02 की भी लग जाएगी फर्स्ट राउंड में, और इसी तरह सेकंड में Q00 की है और 2 की लग जाएगी इसमें। तो इधर ऑफ द कॉइल अगर वर्क कर रही है, जैसे नॉर्मली ओपन का एक यहाँ पे लगा रहे हैं, वैसे नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज का एक लगा रहे हैं, वैसे नॉर्मली क्लोज का दो लगाना पड़ेगा। दो लगाना पड़ेगा, ओके, यस करेक्ट। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो अगर इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको एग्जाम में या उसमें आता है, जैसे आप इंटरलॉकिंग का लैडर डायग्राम विद एग्जांपल समझाइए इन द केस ऑफ डीजीज, then you have to follow this logic and you have to make this sequence. This is all about timer interlocking PLC. Now the last topic of this unit is counter. How to use counters in PLC ladder diagram, that we will study. So counter आप पढ़ चुके हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसमें दो तरीके के काउंटर होते हैं, एक सिंक्रोनस काउंटर होता है, एक एसिंक्रोनस काउंटर होता है। So can you give me the example of asynchronous counter? Anyone? What is the example of asynchronous counter? आपने पढ़ा है रिंग काउंटर, आपने पढ़ा है जॉनसन काउंटर, आपने पढ़ा है और भी तरीके के काउंटर्स आपने पढ़े हैं। सो कैन यू गिव द एग्जांपल ऑफ रिंग काउंट, आई मीन विच एसिंक्रोनस काउंटर?
Or tell me what is the difference between synchronous and asynchronous counter? Anyone? What is the difference between synchronous and asynchronous counter? आप में से कोई बताए? सिंक्रोनस काउंटर में सर क्लॉक का ट्रांजिशन। ऐसे बोलिए। सर अगर सर सिंक्रोनस काउंटर में सर फरहान जमील आप बोलिए। सर सिंक्रोनस काउंटर में सर क्लॉक सिग्नल का यूज होता है सर ट्रांजिशन के टाइम पे। मोहम्मद फहद आप कुछ कह रहे थे, आप बोलिए। सर सिंक्रोनस काउंटर्स जो रहते हैं सर उसमें सिंगल क्लॉक पल्स का इस्तेमाल होता है और एसिंक्रोनस सर इससे ज़्यादा क्लॉक पल्स का मतलब डिफरेंट रहती है। जैसे जो जितने भी काउंटर्स होते हैं सर उन सब के लिए सेम क्लॉक इस्तेमाल करते हैं सिंक्रोनस में, और बाकी एसिंक्रोनस में सर डिफरेंट होते हैं। Yeah, means the change in event is linked with one clock pulse. So basically they are synchronized with some clock event, right? इसलिए उसको synchronous कहा जाता है। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। What is the example of asynchronous counter? Sir, ripple up or ripple down? Yes, that's correct. Ripple counter is the example of asynchronous counter, क्योंकि रिपल काउंटर में एक काउंटर का एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट दूसरे फ्लिप फ्लॉप का इनपुट होता है। सो इट हैपेंस स्टेप बाय स्टेप। एक साथ सारे फ्लिप फ्लॉप्स पे डेटा चेंज नहीं होता है, वो डेटा चेंज होता है रिंग काउंटर में, और इसमें रिपल काउंटर में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। हाँ फैद, यू आर सेइंग समथिंग? नो सर, गलती से माइक ऑन हो गया। Okay. So this counter thing I'll start tomorrow. Let me take the attendance now. Any doubt to anyone in today's lecture? क्लासेस में मैंने अटेंडेंस नहीं लिया, बट आई विल गिव अटेंडेंस फॉर ऑल दिस थिंग। उसमें कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं दैट वी विल डू।